So hello everybody. Good evening. Good evening. How you doing guys? So I would highly request you to please be on camera. This is Shubhra Rani and this is a session of Digital Gone Easy with Shubhra Rani. So welcome you all, Shreya Gupta, Tarun Namdev, Abhishek Jain, Priyansha. Welcome everyone. So yesterday, yes. Can you please guys be on camera? I would love to love to see your faces rather than black boxes because Priyansha is beaming with Anji. Priyansha एकदम चमक रही हो. Yes. So Tarun, Abhishek, Kalyan. Okay, Kalyan, you are joining in for the first time. I would interact with everyone. Uh, let's park all the questions and all the interactions for the end of the session, last leg of the session. Let's quickly jump to the learning part. Are you guys excited to learn something? Yes. Okay. So yesterday we discussed three smart use cases of Google Gemini. So I'll quickly revise those. Can you guys see my screen? Is the screen shared? No, not right. No. Okay. Okay. Now, can you guys see my screen? Yes. Just allow me 1 second, guys. Okay. So yesterday we discussed three important use cases doing Gmail advanced search. For example, you can directly ask to Gemini my latest Amazon order of this, right? Instead of going to the Gmails, you can directly ask Gemini. Second use case was uh, like extracting anything which is there in your Google Drive. Like there are thousands of files in the Google Drive, and if you want a particular file from the drive, you don't need to go to the Google Drive and type in that search bar. You can directly ask Gemini to, okay, give me the PDF of this. For example, give me the resume PDF of this XYZ. You know what all files are there in your Google Drive, okay? And the third use case was regarding Google Docs. So in Google Docs, you have to keep it as @ मैंने बताया था ना @ करके सर्च करना है. तीनों यूज केस में गूगल डॉक्स में भी क्या करना है, गूगल डॉक्स दिख रहा है, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, यानी जब भी गूगल डॉक्स एंड गूगल ड्राइव से कुछ सर्च करना है तो उसे टैग करना ना भूलें. ओके, so in Google Docs you have to actually give it a prompt like this @Google Docs, and you must be knowing the exact title of the Google Doc which you are searching. Okay, and you want to extract some information from, for example, you have a Google Doc of all the job descriptions you have collated somewhere. Okay, and you want a particular job description of XYZ company. So what will you give the prompt here is @Google Docs, give me the entire job description of digital marketing intern at XYZ company in the Google Doc titled, और उसमें अगर वो पूरा टाइटल लिखना पड़ेगा, like for example Shreya has collated all the JDs in JDs for Shreya, for example job descriptions for Shreya. So in double inverted comma like this, you have to write the whole file name, right? Like JDs for Shreya. Okay, it was just a revision exercise. For more details you can check in the entire video, right? Video will be uploaded tomorrow around Abhishek will tell me what time we are uploading that Google Gemini part 1 video. Morning 10 a.m. Okay, morning 10 a.m. Okay, morning 10 a.m. you will have the video up. So please do check out once if you haven't as yet. Okay, so this is just a revision of the previous session. Now we are going to learn three next amazing use cases of Google Gemini. So please bear with me, guys. And if you guys can be on camera, I would be very happy. I'm not at all interested in talking to black boxes. I would love to see you guys. And one more interesting thing I want to say you, when you are on camera, you are more alert. Okay,
And this is the psychology also. Like when you are on camera, you learn better. If it is a very emergency case, like you are driving or you are somewhere else, you can please type it in the chat that this is the reason I can't open my camera. Rest, I rest of the people, please do that. Kalyan, Lakshya, and Abhishek. Okay. Now over to the learning part. Okay. So I'm sharing my screen again. Please confirm, anyone. Can you see my screen again? Yes. Okay. Just allow me 1 second. I'm doing the split screen. So in one part, I have kept the Google Gemini ready for you, the interface ready for you. I have already prompted many things, so it will be easy and time saving for you guys, because otherwise it will take longer. So for today, we are exploring 3 use cases, which are image to text prompt. No, sorry guys. This analyzing image files and data with Google Gemini. This is the first use case for today. So can you guys spot here? This is a data here. Can you see? This is the data of LinkedIn users by country. United States में 190 million people are using LinkedIn. India, it is 87 million. Brazil, it is 54 million. China, 50 million. So whenever you are working in a company or you are doing any project of college or anything, you have tons and tons of images with data like this. And in fact, even complex data, right guys? You get too much of complex data. So how to analyze this and how to convert it into some text form or insights form? So we will give prompt to Gemini. Okay, give me 3 pointer insights of this image. We will prompt like this. The answer of Gemini will be like this. Okay, sure. मैंने ये वाला image डाला. Sure. Here are 3 insights from the image. The United States has the most LinkedIn users. जैसा दिख रहा है 190 million users. फिर है India is the second place with इतना users. China has 50 million LinkedIn users, which is lower than India because LinkedIn is blocked in China. I don't know why it has written, because Gemini has the web access, so it can also add one information to it. Okay. Overall, the image shows that LinkedIn is a popular platform for professionals in many countries around the world. However, it is important to note that the data in the image is from true list and may not be entirely accurate. ओके अभी प्रूफ दिखा रही हूं. ठीक है, जस्ट पे अटेंशन हियर गाइस. आई एम giving you the proof. I have actually written this whole prompt and this kind of response was there. दिख रहा है गाइस? कोई भी डेटा उठाना है, कोई भी इमेज उठाना है और कंट्रोल भी ही करना है. फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे मैंने डेटा उठाया ना, ये कोई भी डेटा उठाएंगे, ठीक है, मान लो इमेज ऑफ डेटा ऑफ जॉब सीकर्स इन इंडिया, कुछ भी ऐसा डेटा आएगा. ठीक है, बहुत सारे डेटा मिलते हैं हमें. ओके, you'll get many data. Okay, you understood the use case, right? Yes. Everybody? Yeah, yes. So I'll keep it for you guys to explore more of it. Over to the next use case. The next use case is just allow me 1 second. My laptop is a bit cranky now. It's hanging. और पे बात करेंगे और हैंग कर रहा है पूरा लैपटॉप मेरा. ओके, सो any data, marketing data, any report with data images, and you can use this prompt. Now it's turn to create a table around it. For example, you have data like this only and you want it in a tabular format. So you can further drill down and give the prompt like this. Present the data in the table format. तो देखा इसने दे दिया ना, यूनाइटेड स्टेट्स 190, इंडिया 87, चाइना 50, राइट? दे दिया इसको, टेबल फॉर्म में भी दे दिया. लाइक अब एक्सपोर्ट टू शीट्स, व्हेन यू विल डू दिस export to sheets, it will create a sheet like this. It has already created one for me.
whenever you are tapping it here in export to sheets, you will get a data in tabular format like this. Got it, guys? Yes. Okay. Okay, the next use case is, okay, let me ask you one thing. Do you know which other tool helps you extract the tabular format from any image? Do you know which tool or platform does this? And it is used in companies as well. And this tool has been very popular, and our mentor also mentioned this tool or platform. Anybody can tell here? If you know this, please raise your hand in the Zoom reaction. It's called Power BI. Have you heard of it? So Power BI also does the same work, extracting tabular formats from images. But how many of you know Power BI? Tell me. So we will, okay, you know Power BI. Great, Priyansha. So we will have a session of Power BI. No. I have a course of Power BI in my IMT thing, but मैंने थोड़ा सा करा क्योंकि मुझे इतना ज्यादा उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था. थोड़ा बहुत जस्ट है मुझे, बट मैं समझा नहीं सकती, सॉरी. मैं अपने आप को समझा लूँ वही बहुत है. So the thing is, guys, Power BI does the same work. In fact, complex works. But we people are not knowing, right? And it will take time to learn Power BI. So अभी क्या कर सकते हैं? Google Gemini में ही Control-C, Control-V करके पूरा इमेज डालो और उसी से पूछो कि इस इमेज का तुम इंसाइट दे दो. Give me 5-pointer insight of this image. Give me in the data in the tabular format. उसी को बोल लो. ठीक है? Shreya, I think this will be very useful in your capstone project. Trust me. You will have tons of data and you have to keep making sheets, tabular format, and you can just copy paste from here. Got it? Yeah. Yes. Okay. Over to the next amazing use case. आई गेस ये सिर्फ टैबुलर डेटा बनाता होगा. वो दूसरा कौन सा पाई चार्ट और वो सब नहीं. वगैरह नहीं. हाँ तो क्या बोलते हैं, पावर बीआई में सब तरीके का डेटा बनता है, मतलब Can टैबुलर make भी, we पाई can चार्ट pie भी. chart in Excel. So Come again, Shreya? pie chart Excel पे भी बन जाएगा तो ऐसे. हाँ, बट पावर बीआई में क्या होता है कि सारे सब तरीके के चार्ट्स एक ही डैशबोर्ड पे आप दिखा सकते हो. हाँ. जैसे हम गूगल एनालिटिक्स खोलते हैं तो वो अलग अलग तरीके के चार्ट्स एक ही उस पे दिखाता है, हाँ, वैसे. वैसे हमें फिर अपने हिसाब से उसे निकालना पड़ेगा एक्सेल से. हाँ, वो Yes. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. And trust me, guys, I really want to learn that because I'm still on it to learn. Like how to present data in different versions, like a pie chart. I know maximum of the tabular version. Pie charts and all I'm learning. बट थोड़ा टाइम उस पे लगाना पड़ेगा. Yes. But अभी simple to go में Google Gemini से पूछ सकते हैं करने के हाँ. लिए, right? Okay. And Yeah. now over to the next use case. Give me 1 second, guys. Yeah. So another use case is extract the text from the image. So, yeah, just give me 1 second. So I gave this prompt. This was an image. I deduce it from the Google. ये दिख रहा है LinkedIn का ही डेटा है कि pages reign supreme. 40% of LinkedIn visitors engage with a page organically every week. दिख रहा है बहुत सारा numerical data दिख रहा है. Your screen is not visible and Monish should say something. Yeah, I was saying same thing. Screen is not visible. Oh my God. We Sorry have guys, to sometimes हमको I ignore forgot करना to. पड़ेगा. एक वो signal नहीं And होता. okay, can you guys No please screen, no be on screen. mute? If there is nothing to add to what I'm saying. Okay, thank you so very much. अभी screen दिख रही है? Not yet. Okay, अभी दिख रही है screen? Yes. I'm really sorry guys, really sorry. So can you see this image guys, जिसमें बहुत सारा data लिखा हुआ है already? दिख रहा है 40% 70K plus 59M दिख रहा है? If you want to extract the text from this image, तो मैंने बहुत पहले एक एक्सटेंशन बताया था. देखते हैं कितने लोगों को याद है. कौन सा एक्सटेंशन था वो? Copy fish.
ओहो, मैंने तुमसे पूछा, मैं भी आ ही रही थी। ओके, कॉपी फिश। ओके ओके, कॉपी फिश। अभी अभी फटाक से गूगल जेमिनाई से भी करवा सकते हैं ये सेम काम। ओके, गूगल जेमिनाई को देंगे ये इमेज को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके, और मैं बोलूंगी, इधर गया, और मैं बोलूंगी एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज। दिख रहा है, मैंने प्रॉम्प्ट दिया है उसको, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द Screen is इमेज। not visible. अरे यार, अभी It's तो not मैंने शेयर shared. किया। ये क्या हो रहा है मेरे लैपटॉप में अभी मैंने शेयर किया हुआ था, राइट? ओके, कैन यू सी? आई हैव गिवन द प्रॉम्प्ट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज। सो Gemini ने बोला श्योर, द टेक्स्ट इन द इमेज सेज pages reign supreme. This means that pages that post weekly have 40% more followers than pages that post monthly, and their following grows 7x faster than the months fasting pages. और इसने पूरे टेक्स्ट को लिख के भी दे दिया है, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी फिश वाला भी काम जेमिनाई से करवा सकते हैं, ठीक है? So these are 3 amazing use cases of Gemini. I hope you guys are on it, और अभी आप present भी करेंगे। देखो, yes, okay guys, The screen is not shared. okay. So अभी आज का रिवीजन कौन करेगा? आज क्या क्या हमने सीखा? 3 use cases have been completed. It's 7:19 already, so we have to wrap up the session as well. So who will recap the session? Any hands, please? Who will recap this session? No one? शुरू से कोई नहीं था? ओके, श्रेया गुप्ता, गो अहेड। क्या क्या सीखा हमने आज? यू आर ऑन म्यूट। I have a question also, but सबसे पहले फोटोज से हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पहला यूज केस। दूसरा यूज केस, अगर कोई भी ग्राफ या डेटा पॉइंट्स हैं, उससे जेमिनाई से हम पूछ सकते हैं कि उसके टॉप कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। थर्ड यूज केस उसको टैबुलर फॉर्मेट में या फिर टैबुलर फॉर्मेट में हम करके उसको शीट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गूगल शीट्स पे। थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? Uh, Can we write MPTY for Shreya, because she was so very well engrossed in the session? MPTY Shreya, that is more power to you, Shreya. This is my code word for MPTY, for appreciation. So MPTY Shreya. Okay, Deepak says MPTY, Swapnil says MPTY. Where are the rest? Sleeping or in gym or having Priyansha, Abhishek, snacks? Okay, just breathe. Where we will get session recording? थामो थामो, आ रहा है, सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। Thank Just you. wait a bit. And for all the YouTube concerns, you can rely on Abhishek Jain, because सारे YouTube recordings का पार्ट वो देख रहे हैं, right? Tarun also writes MPTY Shreya. So Shreya, a lot of appreciation for being active and recapping the session. Thank you so very much. And now over to your question. Yes, कॉफी फिश में तो हम, अगर हमारे पास कोई इमेज डाउनलोड है वो हम जेमिनाई से पूछ सकते हैं, बट आपने बताया था कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे कोई फोटो है तो वहां पे तो हम हम डायरेक्टली जेमिनाई से नहीं पूछ सकते, वहां पे तो मैं उसका वही वही तो है ना, कंट्रोल। अगर उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना, लेके, स्क्रीनशॉट ना लेना हो तो अब तो हम नहीं पूछ सकते ना डायरेक्टली, तो कॉफी फिश का तो हमें तब भी यूज करना ही पड़ेगा। मेरा काम क्या है कि तुम्हारे पास इतने सारे हथियार हो, तुम्हारे तरकश में इतने सारे तीर हो, कि कभी कोई भी यूज केस में कौन सा तीर चलाना है ये तुम डिसाइड करो। ठीक है, जब कभी कॉपी फिश यूज कर लेना, कभी जेमिनाई यूज कर लेना, वो मूड पे है तुम्हारे, है थैंक ना? यू। या ओके ओके। सो गाइज, मैं बात करना चाहती हूँ एक्चुअली, जो न्यू आए हैं ना, कल्याण, कैन यू प्लीज ओपन अप द कैमरा? आई वुड लव टू सी यू. And till the time you are opening, I would love to know what are the reports you are currently studying or something like that. जैसे अगर हम लोग कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट आया तो कितने सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट? जब भी हम लोग कोई मार्केटिंग डेटा पढ़ते हैं तो कितने सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट? तो उन सारे डेटा पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है। पहले हमें बैठ बैठ के खुद से एनालाइज करना पड़ता था। याद है श्रेया, एक टाइम था
when we used to scratch our heads for understanding those tables, those complex data. Now we are living in the era of AI. So Google Gemini is also powered by latest AI features. So we have this Gemini and making our work easier. So without taking much of your time, I would really thank you for joining the session. Sorry, I am actually outside. Okay, just 1 second. Sorry, I'm actually outside and there's a lot of noise when I use my mic. Okay, no worries. I'll see you tomorrow, Kalyan. Tarun, Abhishek, Monish, Swapnil, Jaspreet, Deepak, Priyansha, Shreya, thank you all once again for joining the session. And this is a wrap of part 2, smart use cases of Google Gemini. Part 1 is also up on the YouTube. So do check them out, all the learnings from that video. And I will be coming with part 3 of smart use cases, 3 smart use cases of Google Gemini tomorrow, 7 p.m. sharp. Please do join in. And yeah, till then, one more thing. Don't forget to subscribe to my YouTube channel under the name Digital Gone Easy. All the recordings will be provided here. डिजिटल गॉन इजी पे मिलेगा. एंड डोंट गेट कंफ्यूज बाय 2 नेम्स. एक चैनल का नाम है डिजिटल गॉन इजी बाय शुभ्रा एंड एक चैनल का नाम है डिजिटल गॉन इजी. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes. अगर आप ये सारी प्रॉब्लम And if you are liking my efforts, please do subscribe to my channel. That is ये वाला नहीं, ये वाला डिजिटल गॉन इजी. ठीक है, दिख रहा है? इसमें आपको बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगे. हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन carousel पोस्ट बाय यूजिंग गूगल जेमिनाई, बिल्ड अ यूनिक पर्सनल ब्रांड बाय कंबाइनिंग योर हॉबी विद डिजिटल मार्केटिंग. बहुत सारी बातें हम लोगों ने की हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के अराउंड. और अभी हमारा लिंक्डइन पे एक के बाद एक वीडियो आ रहा है लिंक्डइन से रिलेटेड. एंड एज यू ऑल नो, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स, जॉब्स, or you are a working professional, you have to be active on LinkedIn. So do check out my videos around LinkedIn, and I am 100 not 1000% sure that they are going to help you. Okay guys, thank you so much everyone. And now it's a pick time. Can you guys please hit Shubh, a heart reaction? Yes. Shreya, you want to say I something? have something to ask, I guess. She has Sorry. raised her hand. Oh, So, I want to appreciate you for this thing. You are wrapping the sessions very fast and you are sticking to the point. All the best. मतलब you're doing तरक्की पे good. हूँ ना, तरक्की पे हूँ, तरक्की पे है ना? हो, growth चल रही है भाई. Okay. So Tarun, you joined it for the second time, right? You liked it? Yes, ma'am. Hello? He is Hello. calling you ma'am. ओके, मेरा नाम शुभ है. ठीक है, जैसे शुभ दीपावली होता है, शुभ संध्या होता है, शुभ प्रभात होता है ना? जी. वैसे ही मेरा नाम शुभ है. ठीक है, तो शुभ ही बोलने का. ओके गाइज, नाउ विदाउट फर्दर अडू, let's wrap the session with a beautiful picture of all you people with some emojis, please. And I will be really happy if you can give me hearts. I love the emoji of hearts. So keep tapping on the heart emoji till the time I say 3, 2, 1, because I'm still yet to take the pic. Okay, so 3, 2, 1. Thank you guys. Thank you guys. थैंक यू. एंड आई रियली अप्रिशिएट जसप्रीत, उसका डेडिकेशन. वो सुबह भी ज्वाइन करता है, शाम में भी ज्वाइन करता है. सुबह में वो खेतों में भी रहेगा, सड़क पे भी रहेगा तो भी ज्वाइन करता है, शाम में जिम जाता है तो भी ज्वाइन करता है. आई लव यू जसप्रीत, आई लव यू. थैंक यू सो वेरी मच. These people are source of energy for me, and I'm taking these sessions because of this energy. Thank you so very much. Bye, take care, and कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Bye. bye-bye.